gentlemen, Namaskar, Sasrikal, Salam, this is Amit Kapoor. Today I am going to talk about yearly prediction and events in 2021. What will happen with you in 2021, which type of positive events you will face, which type of positivity you will feel, and which type of success you will achieve in 2021. You know, my all predictions are based on your ascendant sign, nothing to do with your moon sign, nothing to do with your sun sign. If you follow my video, if you watch my video, keep ascendant sign in your mind, open your birth chart and check your ascendants, which ascendants you have. Aries ascendants, Taurus ascendants, Gemini ascendants, Cancer ascendants, Leo ascendants, Virgo ascendants, Libra ascendants, Scorpio ascendants, Sagittarius ascendants, Capricorn ascendants, Aquarius ascendants, Pisces ascendants, which ascendants you was born. Follow that ascendant sign and listen my video. You will definitely get 90% streak predictions as per transit. My all predictions are based on transit. I don't know which type of planetary position in your birth chart, but this predictions is overall depend of the transit planet movement like Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu, Mars, Venus, Sun, Mercury, Moon, and which type of planetary movement in transit is going to happen in 2021. I will explain you in this video. Let's talk about Scorpio ascendants for year 2021. स्कॉर्पियो सबसे पहले बात करेंगे 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 के फर्स्ट क्वार्टर। जुपिटर सैटर्न आपके असेंडेंट से थर्ड हाउस में है, मार्स आपके 6th हाउस में है। फरवरी से लेकर मार्च तक यू विल सी बिग चेंज इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू सेटल इन फॉरेन लैंड देन जुपिटर इज हेल्प यू। जुपिटर इज अ रूलिंग प्लैनेट ऑफ योर बर्थ चार्ट व्हिच इज ट्रांजिट इन योर थर्ड हाउस। देखिए, इस पहले क्वार्टर में आपके आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। अगर दशाएं आपके चार्ट में मार्स, मून या जुपिटर की चल रही है महादशा, तो यू विल डेफिनेटली गेट विद लॉट ऑफ सक्सेस। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल मेक यू हैप्पी। यू विल गेट सम सपोर्ट फ्रॉम समवेयर। जितनी हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। अगर आप किसी किस्म का कोई कंप्यूटर से रिलेटेड या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, या टूर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, या शॉर्ट जर्नीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, यू विल गेट ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स बिकॉज जुपिटर सैटर्न इज इन थर्ड हाउस. Third house is a house of your willpower and courage, and your willpower will be sky high in whole 2021. You will enjoy a lot of comforts and benefits. Due to your strong willpower and confidence and courage, you will achieve a lot of goals in 2021, especially first quarter. Your old debts will be clear. Your old debts which you are facing for last few years, Scorpio, it will be clear in first quarter of 2021. Some far long distance journeys will make you happy. You will enjoy a lot of comforts. Your family and friends will support you. You will get a big support of your friend, one of your close friend in 2021, and you will see a big change in your life. Scorpio, year 2021 is your year. If you do your best, if you design your year 2021 and consult with any astrologer, nearest astrologer, he will let you know which type of dynamics you have in your natal birth chart and which type of Mahadasha and Antardasha you have. But as per transit, in first quarter, you will be sky high and top. Your savings will rise and your debts will be clear and you will enjoy a lot of comforts. Some long distance journeys, you will enjoy 6-time foreign journeys in 2021. Scorpio, this year will give you a lot of gains. If you are an importer exporter, you may get big order from foreign land. Some foreign transactions will make you happy. You may get partner from foreign land because Jupiter's 7th aspect is in your 9th house. Being a lot of your 2nd and 5th Jupiter transit in your 3rd house till 6th of April, from 1st Jan 2020 to 6th of April. First quarter will be biggest game changer time for you. When you go for the foreign, you will enjoy a lot of profits from there. Your health will fine, you will enjoy a lot of comforts, your family will support you, your father will support you, your relationship with your father will improve. You will enjoy good health of yourself and your father. You will spend some quality time with your family and friends. Scorpio, first quarter will totally game changer for you. देखें, जितना मेहनत कर लेंगे ईयर 2021, स्कॉर्पियंस आपके लिए उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। गुरु शनि थर्ड हाउस में अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और करज के सदके आप कुछ बड़ा करने वाले हैं और ये चीजें आपको फ्यूचर को सिक्योर करेंगी। फ्रांसिस अल्टीमेट रहने वाले हैं। किसी बहुत नियरेस्ट फ्रेंड की आपको सपोर्ट मिलेगी जिससे आप बहुत शाइन करेंगे। आपका स्टेटस राइज होगा फर्स्ट क्वार्टर में। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, एंजॉय हेल्थ, वेल्थ,
एंड रिलेशनशिप विद योर फादर विल इंप्रूव। आपके पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे और आपके पिता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। भाग्य आपका आपके फेवर में है इस समय। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, सही दिशा में कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। अगर आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपकी दिशा सही है, अगर आपने दिल्ली जाना है और आप दिल्ली की ही हाईवे को फॉलो कर रहे हो, तो आप दिल्ली जरूर पहुंचोगे और बड़ी जल्दी पहुंचोगे और बड़े कंफर्टेबल वे से पहुंचोगे, क्योंकि डायनामिक्स आपके फेवर में है फर्स्ट क्वार्टर में। स्कॉर्पियो, फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएगा, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज लाएगा। रियल एस्टेट में फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, आप फॉरेन में किसी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई फॉरेनर आपका पार्टनर बनेगा और आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट विल राइज. You will enjoy a lot of comforts, name, fame, prosperity. Scorpio, this first quarter will make your life easy and better, and you will enjoy a lot of comforts. Your old debts, आपका पुराना कर्जा क्लियर होगा। अगर आप नया कुछ लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो मिलेगा। नया व्हीकल आप बाय करने वाले हैं फर्स्ट क्वार्टर में। From 1st Jan 2021 to 31st of March 2021, you will surely buy a new vehicle. That is beyond your expectations. छोटी डिग्गी की गाड़ी है तो बड़ी की होने वाली है। अगर ऑलरेडी बड़ी डिग्गी की है तो एसयूवी आने वाली है, ये कुछ बड़ा होने वाला है, बिकॉज समथिंग इज देयर। फोर्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड इज ट्रांजिट इन थर्ड हाउस. इट सिंपली शोज यू स्पेंड योर मनी ऑन लग्जरी, you spend your money on vehicle or real estate, or any type of foreign activities will make you happy. If you are dealing in foreign land, people will appreciate your work and they will give you a lot of orders. They will give you a lot of money and showing our trust on you. Scorpio, you need to perform your best, because this is a time when good fortune is in your favor and you will steal the show. From 1st Jan to 31st of the March 2021, Scorpio, your base will strong. You will enjoy a lot of comforts, cash in hand, savings will rise, your debts will clear. You will enjoy a lot of relaxation. You will enjoy a lot of mental peace. Your father will support you, your family will support you. There is some good ceremony at your home, some marriage or some engagement at your home in first quarter of 2021, Scorpio, which will make you happy and give you positive energy. कुछ ना कुछ अच्छा समारोह, कुछ ना कुछ शादी विवाह या कुछ अच्छा मांगलिक कार्य आपके घर में पहले क्वार्टर में होगा, जो आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देगा और आप बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रहेंगे। स्कॉर्पियो, ये टाइम रहेगा जब आप जितना एफर्ट डालते रहेंगे अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ फॉरेन एक्टिविटीज़ आपको हैप्पी करेंगी। जितनी ज़्यादा फॉरेन जर्नीज इस साल कर लेंगे, उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट्स आपको मिलेगा। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो समवन विल हेल्प यू फ्रॉम फॉरेन लैंड एंड यू विल इजीली गेट पीआर और वर्क परमिट, बिकॉज जुपिटर सेक्टर इज इन योर थर्ड हाउस, मार्स इज इन योर सिक्स्थ हाउस इन फेब एंड मार्च. Aspecting is on your 12th house. Saturn 10th aspecting is on your 12th house. Mars 7th aspecting is on your 12th house. Jupiter 7th aspecting is on your 9th house. All foreign houses are active. Scorpio, फर्स्ट क्वार्टर को एंजॉय करें और इस क्वार्टर में कुछ बेस स्ट्रॉन्ग बनाएं. स्कॉर्पियो, फर्स्ट क्वार्टर 2021 में अगर आप किसी किस्म का भी फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ या बिजनेस करते हैं, उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलेंगे. अगर आप टूर ट्रैवलिज्म का काम करते हैं, उसमें आपको गेंस मिलेंगे. अगर आप फॉरेन रिलेटेड किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट सेल का काम करते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, यू विल गेट ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ मनी. अनएक्सपेक्टेड मनी विल मेक यू हैप्पी. स्कॉर्पियो, आपके पास धन आएगा जिससे आपके पुराने कर्ज चुकता होंगे फरवरी और मार्च में. ये समय रहेगा जब किस्मत आपके फेवर में होगी और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे. इस सारा साल, खास करके फर्स्ट क्वार्टर, 1 जनवरी 2021 to 31st of March 2021, you feel much relaxed and better and comfort. Scorpio, you need to chant this mantra whole year. ओम सीताराम च हनुमते नमः, 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 ओम सीताराम च हनुमते नमः. 108 time, 151 time, 251 time. Chant this mantra every day morning. You will see miracles in your life. You will see big change in your life. You will see very positive atmosphere, very positive thoughts. You are active after chant this mantra. And read Lord Hanuman Chalisa every night before sleep. Remember, don't read Hanuman Chalisa in a daytime. Read Lord Hanuman Chalisa before sleep at night, after sunset.
First quarter will make your life easy and better, and you will enjoy a lot of comforts, benefits, finances, luxurious life. You may invest your money in stock market and you will get fantastic results. If you have a good Mahadasha, Mars, Moon, Sun, Jupiter Mahadasha in your natal chart, you will feel blessed and you will be sky high. Scorpio, this whole quarter will give you a lot of passion. You are become very determined about your work, very honest, very hardworking, very punctual, This whole quarter will give you a lot of mental relaxation and success related to your professional life. Your seniors will be satisfied from your performance. Those native who are unemployed, they may get job in first quarter of 2021. And you will get job as per your expectations. Scorpio, this is your year. More you do it, more you achieve it. More you put your efforts, you will achieve miracles. You will see miracles in your life. Scorpio, you need to perform best at your workplace because good fortune is in your favor and you will see big change, positive change at your workplace. Your seniors will be satisfied from your performance if you are in job. If you are lecturer, advocate, teacher or any type of institute honor, you will get blessed with a good amount of money. You will get blessed with a very good recognition. Now I'm going to talk about second quarter of Scorpio, which is going to start from 1st April 2021 to 30th June 2021. Jupiter has changed our sign from Capricorn to Aquarius from 6th April 2021 to 14th September 2021. In second quarter, from 6th April 2021 to 30th June 2021, your ruling planet Jupiter is in your 4th house. You may buy new vehicle, but you need to be careful. Don't invest your money anywhere. Don't show your trust on anywhere. This is a time you may get cheated from someone. Don't be a part of any litigation. बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर आपकी कुंडली में 6 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक किसी किस्म का किसी पे ट्रस्ट ना करें, नया बिजनेस ना स्टार्ट करें। आप नया व्हीकल जरूर बाय कर सकते हैं, लग्जरी पे पैसा जरूर खर्च कर सकते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर्स आपके जरूर रह सकते हैं, लेकिन इस समय में नया बिजनेस ना स्टार्ट करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना दें, आंखें बंद करके साइन ना करें, किसी को चेक ना दें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अगर करेंगे तो यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लिटिगेशंस, यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स। सेकंड क्वार्टर में जितने अलर्ट होके चलेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जुपिटर का 4th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। यहाँ पर आपके कुछ काम रुकेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, फॉर्चून आपका आपके फेवर में नहीं होगा। यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन, मेंटली यू आर फीलिंग वेरी लो एनर्जी, मेंटली यू आर फीलिंग वेरी डाउन बिकॉज Jupiter is in your 4th house, but your ruling planet, Ascendant Lord Mars, transit very well in your second quarter. You feel blessed, but situation is not as per your expectations. You need to be careful and alert while investing your money. This is not a right time. Second quarter is not very promising for you, Scorpio, but your hard work convert in sweet success. There is no doubt because Mars is very well transit in second quarter. Don't show your trust on strangers. Don't go for any long distance journey in second quarter, especially related to business. If you want to settle to PR, then second quarter is promising. But if you go for any long distance journey for your business purpose, then you don't go. In third quarter, from 1st of July 2021 to 30th September 2021, Jupiter transit in your Aquarius till 14th September 2021. Jupiter, Saturn are retrograde. Saturn is retrograde in Capricorn. Jupiter is retrograde in Aquarius. You need to be careful and alert while signing any documents or any deal. Don't invest your money in real estate. Don't invest your money in business or any type of trading business. Don't invest your money in stock market. Try to be in a polite talks with your family members. Try to be in a polite talks with your younger siblings. Relationship with your younger siblings will undershadow. Health of your father will be matter of concern. Scorpio, third quarter is not as per your expectations. You are feeling very down and low. You are not in a comfortable position. Your mind is disturbed. थर्ड क्वार्टर में गुरु शनि वक्री होने की वजह से आपके काम आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बनेंगे, जिससे आप काफ़ी डाउन फील करेंगे। आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को अवॉइड करें। सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे ना जाएं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है या किसी दोस्त के साथ या नियर डियर के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्कॉर्पियो, किसी लिटिगेशन में सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज सिचुएशन आपसे संभलेगी नहीं। Scorpio, this is a time when you feel very low energy, when you are not in a comfortable zone, you are feeling very down and you are feeling very upset.
स्कॉर्पियो थर्ड क्वार्टर में अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, नेक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, शोल्डर रिलेटेड पेन आपको हो सकती है, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है। थर्ड क्वार्टर इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। आपके पैसे जो हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन पे लग सकते हैं, परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, आपका पैसा जो है वो अस्पताल के खर्चे में लग सकता है। व्हीकल बहुत केयरफुली चलाएं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। हेल्थ रिलेटेड यू विल फील वेरी डाउन एंड यू विल फील वेरी नेगेटिव एनर्जी। पैसे के लेन देन को थर्ड क्वार्टर में ना करें, कोशिश करें 30 सितंबर के बाद अगर करना है जो भी करें। डोंट गिव योर मनी टू एनीवन, डोंट शो योर ट्रस्ट ऑन एनीवन इन थर्ड क्वार्टर, एंड रिलेशनशिप विद योर मदर एंड फादर विल बी अंडर शैडो इन थर्ड क्वार्टर। Family tie-up is not very promising in third quarter. But overall, because Saturn is in Upchaya Bhav from your ascendants, you will feel relaxed after some struggle. Fourth quarter, from 1st October 2021 to 31st of December 2021 will be a biggest game changer for you. There's a long distance journeys will make you happy. You will earn a lot of money, name, fame, success in foreign land. You will enjoy a lot of comforts. You will buy new property, you may buy new vehicle, you may invest your money in real estate. This is the ultimate time. Fourth quarter from 1st October 2021 to 31st of December 2021, Scorpio, your confidence level will be back and you will be sky high. Your old dreams and desires will be fulfilled. Jupiter again entering your third house, conjunction with the Saturn in Dharam Karam Adhapati Yogya in your third house. You become very spiritual. You will get good gains through communications. You will get good gains through journeys. You will get good gains from your elder siblings. Your elder siblings will support you, or you may support your elder siblings. Some new friends will enter in your life. Some new contacts will make you happy. Your business will flourish and you will enjoy a lot of monetary gains. Your source of earning will develop in fourth quarter. You will enjoy a lot of finances. You will enjoy a lot of good health, wealth, family support, spouse support. Those relatives who are unmarried, they may get married in 2021, first quarter and second quarter and fourth quarter. It's very productive for your marriage. Those native who are willing for second marriage, they are also feel blessed in 2021 because Jupiter fifth aspect is on your seventh house. First quarter and fourth quarter is a very rewarding for your second marriage. Scorpio, this is a year when you feel very promising, feel very positive. With great willpower and courage, you will achieve big goals. Your old dreams and desires will be fulfilled. Third quarter is a bit struggling, otherwise first and fourth and second quarter will be ultimate for you. You may get in touch with new people. They will give you new orders at your business. You will get in touch with new contacts. They will give you very good response in your professional life. If you are any type of engineer, if you are any type of designer, interior designer, fashion designer, you will bless in the fourth quarter. You will earn a lot of money. People will recognize you. You will enjoy a lot of name, fame, prosperity with great achievements. If you are any type of business related to iron, related to liquor, you will get a lot of profits in second quarter and fourth quarter of 2021. Scorpio, this whole year you will enjoy a lot of benefits, success, name, fame, money, and your old debts will be clear and you will be in a comfort zone. But one of your friends will support you in 2021 to make your life easy and better. Because Jupiter 9th aspect is on your 11th house. Saturn is in third house. Foreign activities will make you happy in first, second and fourth quarter. You feel much relaxed and better. You will get a lot of chances to travel in foreign land. People are inviting you from foreign land in 2021 due to your profession. You will be sky high and top. You will enjoy a lot of comforts, a lot of earning are there. Even you, sometime you plan to settle in foreign land because you will have a large circle of friends at foreign land in 2021 and they are trying to help you to settle there. Scorpio, whatever your wish will be granted. Whatever your thought, if you execute your thought in your reality, in your real life, you will definitely achieve a lot of milestone in 2021. You will earn a lot of money from stock market. You will earn a lot of money from vehicle sale purchase business. You will earn a lot of money from real estate. If you are constructor, if you are any type of doing building material work, you will get blessed with a immense amount of money.
Scorpio, this whole year will bring you a lot of happiness, passion, progress, success, name, fame, prosperity. You will enjoy a lot of good things. But you need to focus on your work, do your best, give your 1000% best. You will get 1500, 2000% fantastic results beyond your expectations. Because third house is a house of your willpower, your courage, and Jupiter, Saturn, a long transit, a long planet which staying in 13 months or 2.5 years in Upchaya Bhav, like Saturn and Jupiter, they are a transit in your third house in 2021, almost here. You will enjoy a lot of benefits through your willpower, courage, and you will enjoy a lot of good energy and confidence. 2021 is your year, Scorpio. If you plan your year, if you plan your business, job, profession according to your natal birth chart, you need to consult with your nearest astrologer to know about which type of Mahadasha is active in your birth chart, which type of planetary position is in your birth chart. If you plan your future, if you design your future, you will definitely sky high. Happy New Year 2021, and I hope and I wish you will be sky high, and I'm looking forward to your great success and achievements in 2021. Thank you for watching my video. Namaskar, Om Namah Shivaya, Jai Hind.